achiever. The mantra of success would be shared by our invited guest speaker on Dr. Dharmendra Sengar sir. Before moving ahead, I request the guest speaker and all the dignitaries to come forward to light the traditional lamp of honor and seek blessings from Goddess Saraswati. I feel grateful to have the presence of our CEO of Raisoni Group of Institution, Dr. Sachin Undwale sir, a person who is an inspiration to all. He has given us the path to follow to make our dreams into reality and given the firm foundation for all young minds. Now, I would like to call our respected Dr. Sachin Undwale sir to come forward to say a few words. On the dais, the chief guest of today's function and the speaker for today, Dr. Dharmendra Sengar sir. Guest of honor, person from WCL, Mr. Dayal. Director of Raisoni Business School, R.T. Deshpande ma'am. Guests from RJ institutions and my dear students. On behalf of Raisoni Group of Institutions and its management, on my personal behalf, I welcome all of you to this special talk on how to become an achiever. Sir, Raisoni Group of Institutions is an institution that is existing since last 26 years. And this institution where we are sitting is the flagship institution of the Raisoni Group. Except medical, anything you name, we have in our campus. We have engineering colleges, we have pharmacy colleges, we have management colleges, we have law schools. Everything which is required for an educational sector exists in our group. And this is possible only because of the visionary management headed by Sri Sudhir Raisoni sir, who gives us a vision and we work on the mission for fulfilling his vision. So this particular special talk that has been arranged is keeping in mind the knowledge base that needs to be given to the faculty as well as the students of Raisoni Group of Institutions. With experts like Dr. Sengar, I am sure the students will be enriched with the knowledge which is required by today. Whatever is said about the institutions, whenever we speak about IIM, we say yes, it is an institution of prestige for our nation. And a person from IIM giving us the knowledge regarding the management, we are fortunate to have here. Thank you, sir, for accepting our invitation. Without taking much time, I would hand over the proceedings to the Master of Ceremony. Let us hear from the person, Dr. Sengar. Thank you. Thank you so much, sir. Moving ahead, I now take the pleasure to introduce our today's guest speaker, Dr. Dharmendra Sengar sir. With vast experience of more than 38 years in academics, administration, law and management, Professor Sengar is an adjunct faculty at IIM Nagpur. Prior to this, he was founder chairman and professor, legal management area at Indian Institute of Management, Lucknow. Professor Sengar has been the director, Indian Law Institute, New Delhi, and the Vice Chancellor of Mohanlal Sukhediya University, Udaipur, Rajasthan. Professor Sengar also contributed in several IAS, IPS, and IFS programs as the Joint Director at Academy of Administration, Nainital. Presently, Professor Sengar is a member, Accreditation Advisory Council of India under the Ministry of Education. He is a member, Advisory Board at the Incubation Center, JNU. He has been the member, Steering Committee of Planning Commission of India and member, Board of Studies, All India Management Association, New Delhi. Professor Sengar was also the member of Restatement Law Committee of Supreme Court of India. With a wide national and international exposure, Professor Sengar is a great academic leader, motivator,
and socially conscious institutional builder. Professor Sengar is an achiever and has a passion for mission to inspire, motivate, guide, and help the enthusiastic and energetic youth in the process of their becoming an achiever. I now request Dr. Sajid Ontwale sir to welcome our venerated guest speaker of the day, Dr. Dharmendra Sengar sir. We also have with us Mr. Ashish Dayal sir, State Head of Maharashtra Public Relations Council of India. Mr. Ashish Dayal sir is a well-known public relations professional who works for Coal India Limited and is presently posted at Western Coalfields Limited (WCL), Nagpur as a Manager Public Relations. Mr. Ashish Dayal sir is holding the post of Chairman of Nagpur Chapter and State Head of Maharashtra State of Public Relations Council of India (PRCI). He has won prestigious awards in his career. I now request Dr. R.K. Deshpande ma'am, Director of Raisoni Group of Institution, to welcome our venerated guest of the day, Mr. Ashish Dayal sir. Today's guest speaker who would guide us how to achieve our goals. We request respected Dr. Dharmendra Sengar sir to continue our event by sharing his perspective. Let me begin this very good morning by thanking you to the organizers, particularly Dr. Pandey, Dr. Sachin and Dr. Ashish. Ashish is my friend as well as my first student. I have taught him when I am Lucknow and he was instrumental to invite me here. Actually, when I was coming from Lucknow, I said, Ashish, what I should bring for you? He said, nothing, sir. Then I said, I will give something. He said, no, you should not bring anything. You should come here only. Then I will ask for you. So he said, you to my student here. So that's why I am here. He said, request. And I am not here to showcase my talent because you'll be happy to know that I am from a small village coming from Uttar Pradesh. And I started my career as the science student. I could not become a doctor. Today I have the degree highest in the country in the field of law. So that I thought this is a challenge that I should share with you how I did this destination here. Because many of you, us is achievers making the topic, I think achievers making today I think I should, some of you should take a pledge that from today I will follow what the successful people do. If you want to become successful, if you want to become an achiever, you should follow what the achievers do. So I will share my success stories, I will give my journey, and you should also not follow what the failures do. If you do not want to failure, don't follow them here. So I will give you some clue here. So I may not view what you really want, but of course I will be here to address your question. Don't carry any burden from the class here. Be relaxed. This is not any session based on my experience here, 40 years here. But I am just going to speak by heart. So don't hesitate to ask me question at the end of the session here. First of all, please switch off your mobile phone or put on the silent mode here. Second, that if anyone of you is interested to go, you can go within 10 minutes before I start here. After I start here. And if you do not like, you can sleep. Without a story. And if you do not want to really, then make a picture of mine, but don't cross talk. Don't cross talk. This is a culture of items. We do not allow them here, and that's why they become achievers here. So learn discipline here. We run the class. Actually, without your full concentration on me and my focus on you, cannot have a successful class here. So this is first lesson here. But follow the rule. Thumb rule is there. You should not cross talk. Listen and ask question to me at the end so that I can
speak what I'm carrying my heart and my mind here. So this is the slide, Achievers in Making. It's a very good title I have found today only. From today, actually I will talk in different countries, about 13 countries, about 50 universities, and straight from Harvard Law School to GW Washington DC. But I have not spoken on this topic here. Because that time I was thinking that I am not achiever, but today I feel that I am achiever. So I am able to communicate, and you can correlate with me because I am looking at your faces, a very, very enthusiastic, energy faces like me. जब मैं पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था मैं भी ऐसे था. तो इसलिए you can easily correlate with me. I am not coming from any, in spite of lot of foreign exposure to me, but I am still Indian. Down to earth. मैं गाँव जाता हूँ अपने घर में, बात करता हूँ लोगों से मिलता हूँ. So that's why I convey my good mind to everybody and take this word in achievers here. Next please. This what comes to your mind immediately looking at this photo? Anyone? What comes to your mind immediately looking at this photo? क्या आता है आपके दिमाग में immediately? Immediately. Two achievers. One is a protector of Constitution, the other was a teacher of the Constitution. Abdul Kalam Sahab was a scientist, he was the President of India, but he always desired that he should be known as a teacher. So they respect the teacher. You know that when I was there in class 21, I would not put the name, but two distinguished persons, one top business person and top politician, and I, three appointments were there, and Abdul Kalam Sahab called me first. He spent 27 minutes with me. He told everything about him and asked about me. And at the end, he has given his own notes. He then when you're teaching the subject here, include my content, include my paper in your teaching here. See the greatness of the person here, President of India, requesting me to include his article in my lectures. And that time he also said to Professor, you're lucky that you're in IIM and everybody is not going to IIM. You are a interesting student in IIM, but take care for that beyond IIM. So I am here the part of that one. He motivated me here, go beyond. So work in campus and outside campus here, so this is part one. Second, he said that you're expert of life, expert of management here, but think about it, how you can motivate the youth of the country. Because country has a youth, but they lack mentors. If your parents do not know, if your teachers do not know, who will tell them? At this stage here, I tell the examples here, even in IIM, when the students who are running, who are a part of a program, whose fees is 30 lakh rupees for 1 year, and they do not know. Can you imagine it here? They are working in the top countries and foreign countries, but they are not basic things here, and they were taught, they learned that one. And that time he wrote a letter to me. Then I thought everybody needs some sort of motivation here. So can you stand up? All please stand up, just very quickly. Very quickly, a small exercise here. Very quickly. Raise your hand. Raise your hand. Raise your hand, madam. Take notes of go. More. Or. Thank you. Take your seats. Any messages from this side? Any messages? Any messages? Any messages? Anybody? And we learn, be awake. Anything else? Most important message. Sir, we can become an achiever By practicing or what practicing? By and getting out of comfort zone. attentive and face struggle to become an you know when I say raise your hands and then say more, it means you need motivation. You need motivation. You can do better. You can do better when you get motivated. You get inspiration. So I am not here to make you achiever. You are already an achiever.
एक मूर्तिकार से किसी ने पूछा पत्थर से कि तुम मूर्ति कैसे बनाते हो? उसने कहा मूर्ति थोड़ी बनाते हैं, हम तो एक्स्ट्रा पत्थर निकालते हैं। उस पत्थर से जो है एक्स्ट्रा पत्थर निकाल देते तो मूर्ति अपने आप निकल आती है। सेम वे यू ऑल आर अचीवर्स। It is only when you desire to become achiever and try to remove the extra thing which is extra useless here. Like the water is there, you have simply remove the earth. मिट्टी को हटाएंगे, कंकड़ हटाएंगे, पानी अपने आप आएगा, पानी अपने आप आने लगेगा। You know what I'm saying? It means you all have achiever, you have all the quality inside, you simply have to immerse them. You simply immerse them, and who can help in immersing it here? First mentor is your mother or parents. You're lucky, if you're lucky that you got a good parenting, that you got a opportunity to learn something which is going to help you become achiever. Almost all the students in toppers, it's my observation, I am not now, when there's convocation, when the toppers, I invite them to have a cup of tea with me, and then keep on asking how you topped, how you got gold medal here, and in every success they are behind the parents and the primary school teachers. The same thing happens with me also. So please take care that even if you are not having a parenting like that one, that you can become achiever at that time, not having, but today you have chance here. You are not all equal. So if anybody has missed the boat, you can stay here. So I want to share a small story here that how I can become achiever and what is the process of achiever here. When I was 11 years old, I think 10, 11, and I was in the 6th class. So my father was, just like मेरे घर का कल्चर, तो वैसे मैं गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे घर का कल्चर था पढ़ने लिखने का। तो मेरी माँ जो है रामायण को पढ़ती थी, हवन करती थी, और पिताजी हमारे जो है रामायण गीता पढ़ के रात में सोते थे। वो बड़े भाई सब साइंस पढ़ते थे, ये कल्चर था मेरे घर का, तो मुझे पढ़ना ही था। उसके कारण क्या होता है, आई वॉज लीडिंग द क्लास रूम, आई वॉज टॉपर, तो फ्रंट सीट बैठता था मैं, फ्रंट सीट बैठता था। एक दिन जो है टीचर जो पढ़ा, संस्कृत क्लास था, टीचर जो पढ़ा रहे थे वो किताब भी लाए थे, से पढ़ाते हैं बच्चे टीचर ले आते हैं, तो किताब लाए तो उन्होंने किताब मेरी ले ली। तो जब किताब लेके जा रहे थे तो मैं तो नया छोटा था, मैंने कहा अपनी किताब लाते नहीं, मेरी किताब ले लिया। अब ये बात उस टीचर को खल गई। उस टीचर ने सुना और क्लास के बाद जो है उन्होंने रिपोर्ट किया प्रिंसिपल को कि सी द मिसकंडक्ट ऑफ द बॉय, हाउ ही बिहेव्ड विद मी। प्रिंसिपल ने बुलाया मुझे, प्रिंसिपल अपने रूम में, तो मुझे याद है अच्छा सा एक स्टूल था, तो मारने वाला बेंच, उसमें गांठें थी, उसको देख मुझे डर लग रहा था। तो वो उन्होंने कहा हाथ खोलो, मैं डर के कारण मैं हाथ निकला, मैं खोलो हाथ, तो हाथ खोला मैंने, हाथ जो है तो इधर मेरे हाथ में चोट पड़ रही थी, तो मैं पढ़ा, वहाँ पर लिखा था कि अनुशासन ही राष्ट्र का जीवन है। एक स्लोगन लगा था प्रोफेसर के रूम में, इधर मैं मार खा रहा हूँ, नहीं पढ़ी तो देख रहा हूँ कि लिखा है अनुशासन ही राष्ट्र का जीवन है। तो ये हाथ खोलो, इधर लिखा था तो साथ ही वही है जो भाग की रेखा बदल दी। ये दो स्लोगन पढ़ते पढ़ते जो है मैं मार खा गया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ देखा तो चोट काफी लगी थी, तो मैंने क्या हुआ, मैंने कहा ऐसा होगा। मैंने पूछा इसका मतलब क्या जो लिखा हुआ था। Then she explained me and she told me very good, lesson to me that you were beaten in the classroom only because of your ego and anger. You thought that you were topper sitting in the front seat, you misbehaved with the teacher because of your ego, and you became angry because they said you. So ego and anger, they finished on the same day when I told my mother what's incident here. So any one of you want to become achiever, please leave them as early as possible, ego and anger. They're the greatest problem here. And when the Bhagwan Ram has killed Ravana and he went back to the Ayodhya, he asked the mother, Kausalya asked me, बेटा आपने सुख क्यों मारा? बुद्धिमान था, शिवदाधक था, ज्ञानी पुरुष था। तो उसने कहा कि माँ मैंने नहीं मारा उसको, मैंने मारा है, मैंने मारा है, उसके घमंड ने मारा है, उसका अहंकार ने मारा है, उसके गुस्से ने मारा है। So please take care that if you want to become achiever, take one lesson here. But take care that this lesson helped me in a way that next class I was not sitting on the front row. I was sitting in this last row. And after one year, there's a test in science, and I still remember the teacher's name, Dr. Divakar. He conducted examinations, and after examination, he was distributing the answer sheets here.
He was calling and everybody was coming to his seat and taking his notebook and seat, and but I was waiting for my chance. He never called me. He never called me. He reached me. He reached me along with my answer sheet here. उस स्लिप पे लिखा था, एक दिन तुम इस विद्यालय का नाम रोशन करोगे. And that was the day of my achievement. Starting का जो मेरा था, जो कहते हैं कि पहला कदम वो था. और ultimately I worked very hard. और जब मैं हाई स्कूल में था, मैंने टॉप किया. I broken all the record of that time GIC के. और 40 साल के बाद मैं जब वाइस चांसलर हुआ तो मैंने फ़ोन किया उन्हीं टीचर को, सर मैं आज वाइस चांसलर हूँ. उनका बेटा मैंने पहले भी दिया था कॉपी में. 40 साल पहले उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया था कि मैं कहाँ पहुँचूँगा. See the potential in the student and how predict a teacher can do. A teacher who is really interested in you, he can easily assess about your कि इस बीज से कौन सा पौधा बनेगा, कितना बड़ा होगा, कैसा फूल आएगा. It is known to the teacher, it is known to the parents here. So please think about that. Every person has suffered in life, but who has taken the lessons from the failures, lesson from from parents here? They are all achievers here. So this is the story of mine, and ultimately that when I went to from the high school, I think up to intermediate, I was using a kerosene lamp. तो मिट्टी के तेल का लैंप होते से पड़ता था मैं. BSc में जब मैं गया लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पर मुझे जो है रोशनी मिली बिजली की. तो ये मेरा कैरियर मैं इस गाँव में रहने वाला हूँ. बट आज की तारीख में उसका हाईएस्ट डिग्री कंट्री की है. आई वर्क विद 2 यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया. I have the highest degree in the country in science media. The 2 postdocs in the law, and I studied in Harvard, London School of Aviation, GW Washington DC, and there were talks in Switzerland, UK, Canada, and all these things here. It is only because of learning from very beginning here. Leave the ego, leave the anger, reach the time on the time, and learn from the teachers. Respect teacher and follow their discipline here. So this is the success story here. So today I am going to speak here how to become achiever. Next one. This I have put this deliberative slide here that why I accepted this talk here to inspire and empower and motivate you to make change in your life here. You are not here a part of any syllabus, a part of a course here. You may know, you may attend this class or not. You may learn from here. There is nothing going to harm you. But if you really have a desire inside, the best chance to learn that I am here to motivate you, guide you, inspire you to become and to do something more, something better, and something sustainable, which can stay for a long time. The day may come that you are here a chief guest like me. One day you become achiever, and this college inviting you an achiever to share your experience with your students here. This class is so important for you. And अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि आपने लीगल अवेयरनेस को क्रिएट किया है, अवेयरनेस क्रिएट किया है, but how to motivate the youth to become achiever. This agenda here, and of course Ashish is the one who desired here, so I'm here. And this is based on my personal journey stories here. And in the last session, I will be requesting you to take call for action. कुछ करना होगा वो बताएंगे. Be it into this class here. Listen carefully. This is not the class of the science and the technology or the engineering here. It's the class of life. Don't miss it. If you love yourself, if you love your qualities, if you love your parents here, if you love your institution, be sincere, listen carefully. It will help you in big way. Because the life teaches you a new lesson every day if you are attentive enough in the class of life. This is the class. I think this is a rare class in my life also. I'm going to speak on this topic for the first time here, and it may be also for you, but it may the day when you remember from life. उस दिन मैंने सीखा था और आज मैं यहाँ हूँ. Somebody speak on some forum. Go ahead. This is a slide to showcase here कि जितने भी लोग हैं आज से जितने प्रेसिडेंट हुए हैं मेरे साथ, राजेंद्र शर्मा साहब जो थे ये मैं PhD करा था उन दिनों, राष्ट्रपति भवन मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा मैं LLD कर रहा हूँ. LLD भी लखनऊ से उन्होंने किया था. सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये जो लगते हैं सीट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट है, ये भी हमारी और आपके तरह होते हैं. इनके अंदर भी वही कमियां हैं जो हमारे अंदर भी है. ये भी हंसी मजाक करते हैं, ये भी दाल चावल खाते हैं. दे आर नॉट डिफरेंट हियर. द वे ही आर टॉकिंग टू मी, यू नो व्हाट इज सेइंग टू मी, क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैंने PhD की थीसिस सबमिट किया है. बोले गुरुजी से मिलते रहना. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके पीछे नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर है, उसके पीछे क्या नारायण वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे लिस्ट में बता. कैसे बातें, गुरु से मिलते रहना.
इसकी रिपोर्ट बहुत देर में आती है. And honestly, this tip helped me when I went back to Lucknow. I requested my dean faculty of law कि sir वो report देख लीजिएगा. And honestly speaking, my report was gone to some professor who are delaying unnecessarily here. And because of this communication with the Sankara Sharma, President of India, when I talked to my dean faculty of law, he took the case seriously here. How the small meeting can help in big way here. This is the book I edited with Supreme Court judges. मैंने एक किताब एडिट किया सुप्रीम कोर्ट के साथ में, दिल्ली हाई कोर्ट के साथ में. इसको रिलीज बाय दी प्रणब मुखर्जी. So these are the persons, these books speaks about you. If you talk about you, people may think that you are boasting, but the books are very good introduction about you. They tell your worth. And he invited me there in Rashtrapati Bhavan to release the book here. I'm talking to him. He was just asking me, क्या पढ़ाते हो? President of India is not knowing legal management because this is the course in IIM Lucknow for the first time. Actually, I was instrumental to establish department of legal management. No IIM in the whole country had this department here, and under the banner of legal management, I have trained many judges there in IIM Lucknow. For the first time, many judges are trained in IIMs. Many IS officers, IPS officers here. He was curious. He was, what do you teach? Students come in IIM Lucknow to learn, the management. They're more interested in marketing, they're interested in finance, they're HR, IT here. Why you teach law? Whether they listen you, whether they like you, I said, I don't teach them. I simply create interest in them. Respect for the law, interest for the law. So when they're in practice, they can know where law lives here. Because the many companies like G Cinema, Jet Airways, Coca-Cola, Pepsi-Cola, they lost cases in the court of law because of lack of legal awareness. The big company, lot of money, but they're not having proper documentation here. In the courts, advocates are not fighting. Papers fight. If papers is not there, you will lose the case here. So if money is not going to help you, so I create awareness among our youth, potential business manager, the global manager here, that how much you should be careful about your documents. Keep in custody. When you leave the company, but leave the impact. Don't carry paper with you. Ethics, integrity here. So this type of this inputs are given to motivate our students here. Please respect for the law because you are living in a country which is governed by the rule of law. Rule of law. You do not know why you're sitting here. Why you're sitting here, not flying. You know this thing? Why sitting, not flying? It's so close here, but nobody mind it. Nobody mind. Same way, anything in this room which is not governed by the law. Anything. Everything governed by the law. But we don't mind it like, greatest efforts here. So that is the difference between the developing countries and developed countries. Developed countries, this country will become developed country only when the people are having respect for the law. Legal compliance here. I want to tell a story very interesting. One day, that there's an alumni meet of Lucknow, the senior student in the IPMS program. The senior student asked me, sir, should accompany me to the alumni meet here? And when I was going from the IIM Lucknow campus to the airport, the hotel near airport here, on the way there's red light. And everybody was going, so my student was also. I said, stop it here. I said, क्या हुआ? Red light. Please सब जा रहे हैं. मैंने कहा, अब the moment he stopped the car, जो और लोग थे, उन्होंने कहा, क्या हुआ? गाड़ी खराब हुई क्या? May I help you? उनका नहीं. He interviewed me बैठे हुए मेरे तरफ से. He was not very happy. Students are not happy. बहुत arrogant थे. ये बच्चे जो हमारे होते हैं 30 लाख फीस देते हैं, सो सकते हैं. वो फार्मिंग के पढ़े हुए होते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनी छोड़ के आते हैं. उनके अंदर प्रोफेसर ने कहा रुको, गाड़ी रोक दिया. And he was keep on waiting. When there's a green light, he started the car. I said, stop it here. अब क्या हुआ? अब तो green light है. Stop it. Get down. क्या? Get down. I said, sit back. He said, हाँ सर क्या? गाड़ियाँ खड़ी हैं. That I want to teach you here. That you have a chance of 30 seconds to decide whether you want to follow the wrongdoers. Those who are going on the red light, crossing the red light here, you can follow them. You are following the wrongdoer. Or apply 30 seconds to stop at red light, wait for the green light, and see that how many vehicles are standing behind you. You become leader. You change leader here. So if you care, it means you are leading. But if you're careless, it means you are following here.
So that's why the small steps here in institution, it can help in big way. You know, after a long time, he wrote a very good letter to me. He said, "Sir, I learned a lot on the road, not in IM campus." And he said very interesting story कि सर जब मैं छोटा था तब पापा मेरे छोड़ने जाते स्कूल जाते थे, लेकिन मैं जा रहा था स्कूल पर, जैसे स्कूटर बैठने वाला था पापा ने कहा कि भगवान के पैर छुए, मैं कहा नहीं, मम्मी के पैर छुए नहीं, जाइए। तो मैं चला गया, भगवान के पैर छुए, मम्मी के पैर छुए, बैठा स्कूटर पे चला गया, तो पापा ने रेड लाइट को क्रॉस करके निकाल दिया। तो मैंने पापा से सीखा भगवान के पैर छूना, मम्मी के पैर छूना, बट पापा ने कभी स्कूटर रेड लाइट नहीं रोका। So this is the parenting. When I was just in Calgary, Canada, I was living in campus outside, and one day I was going to campus. I have seen a professor of 70-year-old. He stopped the car at the red light. No traffic police, but he's standing there, waiting for them. When there's a green light, he stopped the car and went to parking area. I went the same year. I said, Professor, there was no traffic police, there's no traffic, why you are waiting here? He shouted at me, how you can say it? And I was 7-year-old, my father was driving and I was sitting at red light, he stopped the car. He started the music. He said that red means relax. So I learned a lot to stop at light at the age of 7 without knowing the traffic rules. This is parenting. So please take care that how the small things at early age can help in big way. And that I want to let you know. Please take care that the professors, the teachers, the mentors, anyone, if they're giving any idea, should welcome them. If you need a light, don't care for the window, you can get light from doors also. Those are not only for security, they can also get to door here. So this is out of box thinking. People always keep parde khol do, but they never say gate khol do. This is out of box. So please be aware of what you can do differently, because everybody doing here, but you can do in different way, you can think in different way, and that can help you in taking to become a achiever here. Yes. He's the Chief Justice of India, and I was director of the Indian Law Institute. My boss was Chief Justice of India. I was keep on talking to them personally. Say, मैं आपसे बात कर रहा हूँ Chief Justice of India से. I keep on person there, and I received him at the Vigyan Bhavan when the biggest conference in the country, when Ministry of the Law and Justice, Minister of Environment and Forest, Supreme Court of India, Delhi High Court, we had a big organization in the Vigyan Bhavan. A person from a small village, they received Chief Justice of India at Vigyan Bhavan. This message to motivate you, to inspire you, that you can also become like me. Next. This is the award by another Chief Justice of India. And that I want to say, I got many awards, many rewards for creating legal awareness, environmental awareness, but this is a new topic here. So I got an award from Chief Justice of India for creating the legal awareness and environmental awareness in youth in different parts of the country here. This is the Amartya Sen, you know, I shared discussion with him. See, Nobel Prize winner, a person from a small village, जिसने कि इंटर तक जो है लैंप में पड़ा हो, मिट्टी के तेल के लैंप पड़ा हो, उस बंदे कर्ज देखिए कि he is talking to Amartya Sen. See the courage. It is only has come in you. You have. There is a desire to make it. You know, जैसे कहते हैं डायमंड नहीं होता है, उस पर कीचड़ पड़ा होता है, उस कीचड़ को हटाने के बाद चमक अपने आप आती है. यही काम इंस्टीट्यूशंस करती हैं. So don't take that you are here to finish syllabus. When studying here, please try to find a friend of your mind. When mind matches, frequency matches, you can form a group here. So this is the best chance here to find a good friend who is caring for you, who loves you. What means loves you? Who loves your qualities. And he's helping you to promote your qualities. It's not like physical love. Always, you know, the youth is always talking, you know, जब मैं कभी एयरपोर्ट बैठता हूँ, they always talk about, you know, GF, BF, relationship. ये जब भी देखता हूँ, generally, बहुत कुछ हो गया, the sports and the cinema or the food. They never talk about what I want to achieve, what is my values, where I want to go, who can help me. I have never heard this thing here. That is also great motivation for me to come here. Please talk about GF and BF, all these things here, but not always. Your priority is for here that you have come here to learn something, to make a career. Anybody can tell me that for whom you're studying?
आप इतनी मेहनत करते हैं किसके लिए करते हैं? Ourselves. Anything else? Anybody? पीछे से आप किसके लिए पढ़ाई करते हैं यहाँ पर? खुद के लिए, पेरेंट्स के लिए, और कुछ? Please think beyond. Think beyond. Today I am going to give something new thing. Remember, you're not studying for yourself, your parent here. You're studying for the nation. You're studying for the nation. You're studying for society. Why and how? Because what you study here is going to use at a company. And if you are studying seriously, sincerely, carry some values, use the knowledge, skill, attitude, approach at the workplace here, you take a right decision there. And right decision means profit to the company. Profit to the company means dividend to the shareholders, tax to the state, salary to the employees, and bonus to the workers. But if you are careless here in classroom, how you can take right decision there? They may hire you because of the name of the institution, but you not perform, your decision will be wrong, company go in loss, and everybody will suffer here. So basically, you are not studying for yourself here, you are studying for the nation. Everybody will suffer because of non-performance here. Because company is creation of law. कंपनी जो होती है ये लॉ है, उसके लिए कंपनी आपको हायर करती है कि कंपनी की आँख कान नहीं होते, वो आपके दिमाग से काम लेती है। और कंपनी बनती क्यों है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, जिसके पास पैसे हैं वो शेयर्स लेता है, आपके पास नॉलेज होता है, उनका पैसा आप नॉलेज, एंड लॉ सेड आई एम गोइंग टू मेक कंपनी हियर। तो कंपनी इज क्रिएशन ऑफ लॉ, where you put your expertise, they put the money, and the government said I will take care that nobody is going to create a cheating, and they are working very hard. So please take care that you study here in a way that it can help at workplace here, and try to learn this thing here. That should not be negligent. If you're negligent in the classroom, you can be negligent in the office also here. If you're not sincere here, how you can be sincere there? Because this is a quality, this is a brain nerving. If you're creating this atmosphere in the mind here of carelessness, you cannot be sincere here. So please learn what you want to do in the system here. I'm very happy Mr. Raunak is there. Raunak has asked me a question, sir. कि आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, the marketing, finance, all these things. I said this is a very good question here. So please, I want to put this topic here that if any one of you is a practical, then think about the demand in the market and try for this one. But one who wants to become achiever, he should listen to himself. Whether you want to fulfill the dream of the companies, makers, company owners, or the dream of yourself here. If you want to fulfill your dream, you want to become achiever, then join the company which is matching with your values, which gives satisfaction to you, even if you're getting less salary here. Many students of in IIM Lucknow, they join film industry, they're musician, tabla, bhadak. Somebody is teaching a school, somebody is running NGO, they're more happy than the person who works in multinational companies here. In 2007, I went to the Hong Kong for placement there, and I had alumni meet, and some of the students came to meet me here. One of them said, sir, मेरे पास बहुत बड़ा मकान है यहाँ पर Hong Kong में, a very big car here, but I don't feel going office. I don't feel going like his office. ये सब कुछ तो हो गया मेरे पास में. I say, but you are not having any higher purpose. Higher purpose. You become very practical to get a fund assignment, to get fund company, to get a lot of money here. But it is not matching your core values here. I advise him that to find out a locality where the Indians, are living there, try to help them, try to guide them here. And next time when he came back to India, he advised me to say it worked very well here. I said, it is your core competence here. While you're working for the money, also take care for you, should respect for you. You should know the tutor insight. Intuition क्या होता है? Intuition होता है tutor insight. आप सुनते ही नहीं कभी. मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार मैं अपने गाँव जा रहा था, तो वहाँ पर वो सिक्योरिटी मैन रखा हम लोगों ने कि वो रहता है कि साहब आइए हमें मिलेंगे. पता नहीं मैं थोड़ी देर जाने के बाद लौट आया, ना मिले वो बंदा. कहीं तो दिया मिलेगा, तो चाबी मैं रख गया अपने पास में. Now think about that, the decision of mine to come back and taking key and carry with me, it was a call of insight. Institute जो था tutor insight, this about intuition, and ultimately when I reached village,
the security guard was not there. He has gone somewhere else. So if I not listen myself, I may suffer here. So please try to listen. Self-talk, self-listening is more important than learning from the teachers even though. You should have mentor. The greatest mentor is inside. Inside. Give sufficient time to listen yourself. Sit alone, listen, talk to him. Who am I? What's the purpose of being here? What I should do? People remember me even if I'm not here. And these things will guide you. So even if you're not getting a multinational company, but a company of the choice, you will not feel tired to work in that area. Because it is your choice. You derive pleasure. You're not feeling tired here. So that is the purpose of making an achiever. That if you really want to become an achiever, listen you. Fulfill your agenda, have a goal, fulfill, have a dream. But how you can do this thing? When you know your qualities. And quality will come to when you sit alone. When you listen to a professor in the classroom, attend the classes, listen to subject whose subject you like most, which when you're not tired here. So this is the way to identify your niche. और उस niche के एरिया में वर्क कीजिए और उसमें मार्केट क्रिएट करिए. Don't follow the market, but make a market based on your competency and you become a student. He's a Harvard professor. He has given me a book, and when he has seen my degree, he said, "You Indian, this degree." Harvard professor. बहुत कम लोगों पर डिग्रियां होती जो हम लोग पास में हैं यहाँ पर. This person is known for his achievement, but when he met me in Harvard, I gave the example of my own knowledge. I told this professor, life is larger than law. I was quite impressed. Next. The story, what I told you, the success behind my achievement is my mother. She wrote a book. This book is Apna Shah. This book released by President of India, Rashtrapati Bhavan. And she is my mother. And she has given the lesson I can never forget. And still they are my benchmark. And when the President of India was asking to my mother, कि कितना पढ़े हैं, तो बोले कक्षा 6 पास. बोले इतना सारा ज्ञान कहाँ से आ गया? कक्षा 6 पास किताब लिखी और उस किताब में कुछ एडिटिंग की थी, किसी प्रोफेसर मैंने कराई थी एडिटिंग. उन्होंने कहा कविता की बुक खरीदी. तो उसी कविता को पढ़ा उन्होंने, जिसमें एडिटिंग कराई थी. उन्होंने कहा गलत छपा है इसमें. मेरी मदर ने कहा. मैं चुपचाप मुस्कुरा रहा था कि ये उनकी ओरिजिनल कविता थी और किसी प्रोफेसर ने उसकी एडिटिंग की थी टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल. और उसी को उन्होंने पढ़ते पढ़ते बोल दिया प्रेसिडेंट से कि गलत छपी हुई है. एंड सी टोल्ड मी कि जब पूछा उन्होंने इतना सारा ज्ञान कहाँ से आता, उन्होंने कुछ नहीं, ईश्वर में भक्ति, पढ़ने लिखने का शौक, no grasping, means trust in God, interest in reading, and no interest in grasping. These 3 months I learned for the first time in the Rashtrapati Bhavan about my mother, who is she. And a very interesting story that how I became a law professor. Actually, I want to become a doctor. And when I appeared for the PMT, I could not crack. And due to 4 months, I could not get admission in MSc. So ultimately, I took the law. Unwillingly. मुझे अच्छी तरह से याद है कि 5 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन में हिंदी में लिखे थे, तो इंग्लिश में लिखे थे, एक क्वेश्चन आधा हिंदी में आधा इंग्लिश, ऐसे ही. Unwillingly. Then I told my mother, she said, no. You lost the PMT because you have not given 100%. She gave me 2 lessons here. Give 100%. अब लॉ में आ गए तो लॉ में 100% देना है. And second, to motivate me, help the poor. कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं, नीडी की हेल्प करते हैं, then forget about yourself. You will forget about that you lost the PMT because you are helping others. And when you give 100%, you have no time to think about past. You perform here. So I got the success because of 2 months and something which she said to my कान में चुपचाप क्या कहा, ये समझने वाली बात है. एक माँ जो है बच्चे को कहाँ सिखा जा सकती है. कान में कहा कि बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत पढ़ते हो. अब ये बात मुझे आज भी सी नो मोर 50 साल पहले की, 60 साल पहले की, तब उन्होंने मेरे कान में कहा था कि बेटा खुद तुम पढ़ते हो, तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ. ये जो कान में कहा मुझे तुम्हारे में बहुत क्वालिटीज़ हैं. You're very lucky. You're lucky. These things are carrying that I feel lucky because my mother told me कान में चुपचाप कहा था. It is still very good. I'm very lucky. So I'm lucky that I'm addressing you here. Please be achiever. फिर बाद में जब मैं सक्सेसफुल हो गया, जब मैं डिग्री को मिल गई मेरे पास,
हार्वर्ड सब थे। उसके बाद उन्होंने एक दिन कहा मुझसे कि बेटा किताबें छोड़ो, इंसान को पढ़ो, इंसान को पढ़ो। और ये बात क्यों कही थी कि जब मैं IIM में था तो मेरे यहाँ एक चपरासी था, उसको कुछ वेजेस की कुछ प्रॉब्लम थी। तो जब एक दिन आया तो मेरी मदद की IIM में, तो उन्होंने इससे पूछा कि और बेटा ठीक, बोले कि भैया से कर दो, मतलब मुझसे कर दो कि हमारे कुछ पैसे उसे बढ़वा दें, कम मिलते हैं। And you survived. No, I will not quote the name of the institution here, but I was working there. But there is an institution you do not know. Some people are, trying to spoil the image of the institution for personal gain here. These casual laborers were not getting wages here because of the cut in between, the brokers in between here. And ultimately, I took the case and took it to the board. Can you imagine? I fought the director of IIM for the protection of the rights of the casual laborer. It's a message from my mother, and today, whenever I go to Nada campus, the security guard, the people, they know me before any faculty come to me. This is very I still remember when I chairman the mess secretary came here, कि सर वो कुछ सैलरी बांटनी है लोगों को, कैजुअल लेबर्स को, मेस में खाना बनाते हैं। उसी में से किसी ने कहा कि सर ये पैसे मुझे कम देते हैं। तो मैंने उसमें सेक्रेटरी बुलाया शाम को कि आप मुझसे मिले। तो ये आई थिंक कि बहुत अच्छा किसी अच्छी फैमिली था, इज वेरी वेल ड्रेस्ड, अपना ड्रेस पे बच्चे डालते हैं। तो इसमें मेरे कमरे में आया, मैंने कहा कि उसके हु कुक्स फूड इन फैमिली। तो सर क्या ना, हु कुक्स फूड इन फैमिली? तो समझे नहीं, खाना कौन बनाता है तुम्हारे घर में? तो मम्मी बनाती हैं। उसमें क्या सर? मैंने कहा मम्मी बीमार पड़ती कौन बनाता है? तो दीदी बनाती है। तो वो शर्म नहीं आती है? तो इसमें शर्म किस बात की? मैंने कहा ये काम जो है मेस के एम्प्लॉय करते हैं, जो तुम्हारी मम्मी करती है, तुम्हारी बहन करती है, यही काम तुम करते हैं, तुम उनको पैसे नहीं देते पूरे। इस तो चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं। मैंने कहा वो खाते वही हैं जो आप नहीं खाते हो। आई नो, आप बैठा अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे स्कूटर पर चले जाते हो बिना बताए हुए। 50 से 60 खाने रोज गेस्ट आते हैं डेली। दिस इज द फूड which is wasted. So they're not taking any food from you. It is the food, if they're not eating, it will go to waste here. So ultimately he went back, रात में उस मीटिंग किया। अगले दिन आता है कि सर आप बताइए कितने पैसे बढ़ा दें। मैंने कहा नो, कितने पैसे नहीं है। You're not the employer, you're not the employer, the student here getting money from your parents here. But take care of this casual level. They're working for you, they're working like your mother, and so they take care that you have a proper breakfast at time so that you should not miss class. Should have a healthy food and drinking Johnson here. They take care. Who cares for you like this one here? And the boy was so much impressed, honestly speaking. He given the maximum rise. वो कहते हैं अभी भी जाता हूँ लखनऊ, कहते हैं इतने पैसे कभी नहीं बढ़े, इतने पैसे बढ़े थे इसमें। That depends upon that how you can go into. अब किसी से कोई काम लेना है, try to motivate him, try to inspire him, talk in a way that go to the heart. Don't be casual. मैं chairman student affairs तनख्वाह बढ़ा दिए. He may be arrogant, he may not do this thing. But if you really want something, use your heart and make a persuasive communication. Make a persuasive communication. Talk in a way that he should follow you. He should do something what you really want from him. Next. Now all achievers have the big dreams. छोटा इरादा पाप होता है। छोटा इरादा पाप होता है। ये मेरे नाना जी ने जब पढ़ाया था मुझे। Anybody know the शिव खेड़ा? सुना नाम किसी शिव खेड़ा का नाम? शिव खेरा बेस्ट मोटिवेशन। इनको बुलाता था मैं नैनीताल में, आई सब जो पढ़ाता था मैं उसी प्रोग्राम में जब पढ़ा रहे थे शिव खेरा साहब, तो मैं पोस्ट डायरेक्टर था उसका। तो पढ़ाते पढ़ाते मैंने कहा कि सर ये तो मेरे नाना जी ने कहा, मैं 10th क्लास में था। बोले बैठ क्या लंच माफ करेंगे। बोले बताओ इनमें से कितने के नाना जी को पता है इसके बारे में। दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपको कितनी अर्ली क्या पता चल जाता है। They came to know that day, but I was knowing 10 years before. So that's why the big agenda is life में जो है should always have a big goal. अगर आपको बॉम्बे जाना है तो माइंड जो है बॉम्बे जाने का सोचता है। माइंड जो काम करेगा वो बॉम्बे का रूट बताएगा। But if you want to go London, then वही माइंड जो आपका है, the moment you change from Bombay to London, वही माइंड लंदन पहुंच जाएगा। See the capacity of the mind here. That depends upon you how you use the brain. क्या तय करते हो, आपका माइंड उसी हिसाब से आपको हेल्प करता रहेगा। तो never think small. Small is a crime. जानते लेता हूँ मैं आपको। मैंने कभी जहाज नहीं चलाता।
इंडिया में कभी नहीं चढ़ा था, मुझे फर्स्ट फेलोशिप मिली। आई वाज द फर्स्ट इंडियन, कैन थिंक अबाउट, इतने बड़े हिंदुस्तान में आई वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट फेलोशिप फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ कनाडा टू डू माय पोस्ट डॉक्टरल यूनिवर्सिटी कैलगरी। उस गवर्नमेंट ने मुझे वहाँ पर कनाडा में 6 महीने तक रहने का, आने जाने का रास्ता फ्री दिया था। तो व्हेन आई वेंट टू द एयरपोर्ट, आई वाज ट्राइंग टू गेट माय बोर्डिंग पास। तो काउंटर पे पहुंचा, सरदार जी थे। मैंने सरदार जी, मैंने कहा मैं कभी जहाज नहीं चढ़ा हूँ, मुझे विंडो सीट देना। तो मुस्कुराया उसने, उनका ट्राई किया, उनका सारी कोई विंडो सीट है। तो पीछे बंदा खड़ा था, उनका नहीं सीट चाहिए, आगे बढ़िया। मैंने कहा प्लीज़ फिर ट्राई करिए, ट्राई करो प्लीज़। तो उस बंदे ने फिर ट्राई किया एंड देन ही स्टूड अप फ्रॉम सीट, मेरे हाथ मिलाया। उनका यू आर मोस्ट लकी पैसेंजर। मैंने क्या हो गया? ही सेड यू गॉट एग्जीक्यूटिव विंडो, उसका किराया 8 गुना होता है। बट आई हैव अ राइट, सी दी लिबर्टी गिवन टू द एम्प्लॉयर्स इन द फॉरेन कंट्रीज हियर। उस बंदे को जो काउंटर बैठा था, he had changed my seat from the ordinary to the special executive class here. I got a executive window here, and that shows my interest. अगर मैं शर्म कहता कि मैं क्यों कहूँ, मैं जहाज पहली बार चढ़ रहा हूँ, कई लोग कहते हैं ना मैं क्यों कहूँ किसी से, मैंने शर्म नहीं किया। मैंने कहा मैंने कभी जहाज चढ़ा ही नहीं हिंदुस्तान में, मुझे चाहिए विंडो सीट में। एंड द मोमेंट आई कम्युनिकेटेड हिम, ही टुक इंटरेस्ट एंड अल्टीमेटली आई गॉट विंडो सीट हियर। तो मेरी बर्थ मिली थी प्लेन पर, मेरी फर्स्ट ईयर ट्रिप थी। सी दैट हाउ लकी आई एम हियर। That was told by my mother, you know. So that I want to say, if you need something, pursue, don't hesitate, beg the help. आपने सुना होगा प्रियंका चोपड़ा के इंटरव्यू में पढ़ा था, एक बार कह रही थी कि जिस चीज़ को मैं चाहती हूँ ना, उसको मैं भीख मांग लेती हूँ। जिस रोल चाहिए मुझे, उस रोल के लिए मैं भीख मांग लेती हूँ। I never hesitate, I never care for my ego. I go there because I like my role and I'm successful here. The moment you decide some goal, you try to achieve them. On the way you can take help of someone, you can beg help, you can request him, and that is the stage of achievers. The starting point of all achievements is desire. Desire कहते हैं इच्छा होते हैं। जब आप जो मेरी इच्छा अगर यहाँ नहीं आ पाता, the desire to move, then to move, then move here. Desire, to little desire, but to big move here. So if any one of you have a desire to become achiever, it's the best class. मैं चाहता नहीं कि मेरे पापा की फैक्ट्री चल रही, मुझे बैठना ही उसी में है। मुझे तो बॉयफ्रेंड मिल गया, उसके बाद बहुत पैसा है। मुझे गर्लफ्रेंड मुझे मिल गई, मुझे क्या करना, मुझे डिग्री मिल गई, पापा ने आगे छाट रखा है। उनके लिए ये क्लास नहीं है। ये क्लास उनके लिए है, those who really want to be distinguished person here. एक होता है कि एक कंपनी में जो है वो CEO बन गया, पार्टियाँ हो रही, शैंपेन बह रही है। एक बंदा वो होता है, इज नॉट सेटिस्फाइड, इसे नहीं कुछ और करना है। अब याद है कि जैसे कि अगर आप किसी नागपुर में संतरे मशहूर हैं यहाँ के, अगर संतरे के बगीचे में बैठे हैं मैडम, आप संतरा गिरता है तो क्या करेंगे आप? यही होता है। अब बताइए न्यूटन में यही क्या होता अगर तो क्या होता? अब ये क्या करना चाहता हूँ मैं, क्या करना चाहता हूँ मैं, नॉट गुड थिंग्स कम इमीडिएटली जो चीजें आती हैं इसको उनकी रिएक्शन, बट शी इज नॉट थिंकिंग अबाउट द गिफ्ट ग्रेविटी ऑफ माय क्वेश्चन. So when somebody is asking you, somebody is shouting at you, don't react. Don't react. Give response. Don't look at him. Listen to the words. Respond in a way that he's open his eyes. Anger, first you create insight and give anger. It means you create a poison inside and then deliver here. Don't be angry. Don't be reactive. Rather be responsive. Talk a common sense. विजडम जो होती है, कहते हैं कि अगर आप किसी डिले करते हैं, आप कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई गुस्सा करता है, तो अगर जितना डिले करते हैं उतना ही अच्छा जवाब आता है, उसका उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है. बिकॉज उस समय क्या विजडम काम करती है, आपका विवेक काम करता है. शुरू में माइंड काम करता है, ईगो अहंकार काम करता है, लेकिन व्हेन यू टेक ए ब्रेक, टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, योर इंटेलेक्ट काम वर्क्स, तो विवेक काम करता है, एंड देन यू लूज एंगर and then become responsive to talk in a sense वो बंदे कहता है ये क्या कह दिया उसने, and then he regret. So don't react but respond. So you should have a desire के साथ साथ जो है, a balloon goes up not because of the size and the color, a balloon goes up because of the gas inside. You have a desire but you have a qualities.
The quality of a gas inside means that is a peaceful, pleasant, powerful, loveful, knowledgeable person. These are the qualities you have to inculcate. They are already with you. You have to simply expand them. The real definition of love is that if you love yourself, you love your qualities and expand them more and more and more, and then you become a God. God is nothing. Simply the best version of you is God. The quality you are carrying, the quality the child is carrying, if these qualities are expanded, this is God quality, divine qualities are here. So please try to understand here that if you really want to become an achiever, have a qualities, inculcate a sense of responsibility towards society, towards the environment, towards your friends. If he has a good qualities, motivate him, promote him, help him, and in this process, you also develop yourself here. So put the qualities, expand the qualities, it's the real friendship, true friendship. Relationship ये जो क्या कहते हैं मैगी चिप्स क्या पेप्सी कोला चिप्स कोला इट्स ओके बट रियल क्वालिटी होता है who really listen you, who try to communicate, you speak well, your communication is good, you dress well, you have a confidence, and it means that he's trying to encourage that I have confidence, you know, and you're appreciating. I should have more confidence here. This is sign of good friendship. You have true friendship in this one. Next. Achievers are not born talented, but they possess the I can do attitude. कर सकता हूँ मैं. जब मैं ला कर रहा था लखनऊ सिटी से, वहाँ पे एक लाइब्रेरी थी, उसका नाम था डॉक्टर आर्यू सिंह लाइब्रेरी. तो मन तो था नहीं मेरा पढ़ने के लिए, तो डॉक्टर बनना चाहता था. तो मैंने पूछा किसी प्रोफेसर से कि ये डॉक्टर आर्यू सिंह कौन थे. उनका सर वो द फर्स्ट इंडियन टू गो हार्वर्ड, द फर्स्ट इंडियन टू गो हार्वर्ड लॉ स्कूल. तो मेरे दिमाग में आ गया हार्वर्ड लॉ स्कूल क्या होता है. And that design in this Lucknow city took me to Harvard Law School. And when I was sitting in Harvard Law School, मैंने पूछा अपने आप से इसके आगे क्या. लॉ की फील्ड में Harvard Law School the top. And I start thinking about that when I will go back to my hotel, and from hotel I will take a flight for India to next day. From the Delhi to I go to Lucknow to my village. Then the place where I was born, Janam Bhumi. And you trust me that I bought land there to have a school for children, to motivate them, educate them, empower them. इसी गांव में बैठकर एक माँ ने एक किताब लिखी, एक माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे ने अपने एफर्ट से, अपने डिसिप्लिन से हार्वर्ड तक पहुँचा. That is what I want to do. You can do this. Please think about जब भी कोई गोल तय करते हैं तो ये लाइफ जो होती है not like pass fail loss profit, it is a continuum. रात दिन ऐसा नहीं कि रात के बाद दिन आएगा नहीं. सेम वे अगर गोल तय किया है अपनी लाइफ का, you want to achieve, you may get defeat, you may get disappointed, you may get frustrated here. It does not mean that you should leave the goal here. Wait, have patience will pay. And sometime you may jump, sometime you get ladder. What is ladder? If you want to have a good teacher, good mentor, he can act like ladder. He can give me a quick way to go there. The process may take long way, but he can guide you in a way that we should minimum time here. So never hesitate to achieve a goal with the help of other people who know more than you. Next. A small aim is the crime. I already explained this one. I have a great one. Abdul Kalam Sahab used to say it's a crime here. मैंने एग्जाम्पल दिया क्या था, पढ़ाई खाता नहीं था तो मैं कनाडा का फर्स्ट इंडियन होने जाने वाला और मैं स्टेटिव क्लास में सफर नहीं कर रहा था. इट वाज अ बिग गोल, मुझे कुछ बड़ा करना है. डिजायर. नेक्स्ट. हैव कॉन्फिडेंस एंड करेज. वो कहते हैं कि विजन है आपके पास में लेकिन करेज नहीं है. यू कैन. करेज जो होता है यही तो आपकी हिम्मत बढ़ाता है आगे बढ़ने के लिए. लोग तो फ्रस्ट्रेट करते हैं या कुछ नहीं कर पा रहे. प्लीज टेक केयर दैट यू शुड हैव. मैं कर लूँगा, मुझे पता है. आई विल बी फेलिंग बट आई विल रिपीटिंग, आई विल लर्निंग, आई विल आस्किंग, आई विल क्वेश्चनिंग. These things are here and I cannot work but I can do it, not I cannot do it. Next. Hold no fear in your heart and you will win the unstoppable. Unstoppable का मतलब होता है कोई नहीं कर सकता. छोटी सी कहानी है. दो बच्चे थे, दो दोस्त थे, तो अपने एक जंगल में घूमने के लिए गए. एक उम्र 8 साल की थी, 12 साल की थी.
और वो जंगल में भूल गए, रास्ता भूल गए। रास्ता भूलते भूलते जो है कुएं के पास पहुँचे और वहाँ पर जो है उनको प्यास लगी थी, तो उसने जो है पानी भरने की कोशिश किया, तो वो बड़ा लड़का जो पानी भरने की कोशिश करता है स्लिप कर गया, स्लिप करके कुएं में गिर गया। अब वहाँ पर कोई बताने वाला नहीं था, पैसे निकाले, चिल्ला रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। उसके बाद छोटा बच्चा जो 8 साल का था, उसने देखा कि पास में रस्सी पड़ी थी, एक बाल्टी पड़ी थी, उसके अंदर उसको डाला कुएं के अंदर और उसको खींच के निकाला उसको। जब वो गाँव में गया तो उसने कहा, बताया जाकर कि मैंने इसको कुएं से निकाला है। तो लोग उसको हंस रहे थे, ये 8 साल का बच्चा 5 साल बच्चे निकाल सकता है। तो लोगों ने कहा कि नहीं चाचा, थे गाँव में वो सीनियर आदमी थे, जैसे ना गाँव में आपसे होता है, किसी सीनियर लोग आ जाते हैं पूछने के लिए, ये कैसे हो सकता है कि 8 साल बच्चा 10 साल बच्चे कुएं से निकाल सकता है? उनका हो सकता है, हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वहां पर कोई ये बताने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर सकते हो। वहां पर कोई भी डिस्कस करने वाला नहीं था। वहां पर उस बच्चे के अंदर इतनी ताकत आ गई इसलिए कि कोई बताने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर सकते हो। तो प्लीज कीप अवे योरसेल्फ फ्रॉम दोज़ हु आर डिसअपॉइंटिंग, डिस्करेजिंग, नॉट मोटिवेटिंग हियर। ये ताकत आपके अंदर खुद है, उसको मत जाने दो, उसको बचा के रखो, मत मिलो लोगों से। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी थी तो उनका एक शिष्य था जो बहुत टाइम वेस्ट करता था, तो लिखने से पहले उसको भेज देते थे किसी काम के लिए 5-6 किलोमीटर दूर, कहते तब आना जब बुलाएंगे हम, तब तक लिखते रहते थे। प्लीज कीप योर फ्रेंड, नॉट फ्रेंड बट योर पार्टनर, यू कैन से a classmate here who is not helping in your agenda to achieve it. They are not true friend here. Those are wasting your time, those are wasting energy, engaging in unproductivity. They are not true friend here. Please keep away and protect your energy, confidence and courage. You can do already, because the God has given a lot of courage to you. Simply have to protect it here. I learned that the courage was not the absence of fear, but triumph over it. The brave man is not one who does not feel afraid, but who conquers fear. डर होता है, डर जो है, इट इज पार्ट ऑफ पर्सनालिटी हियर, बट हाउ यू मैनेज इट। नहीं ठीक है, मैं कर लूँगा, मुझे पता नहीं, मैं पूछ लूँगा, लेकिन डर पे बैठ नहीं जाना है। इससे डर को जो है आपको एवॉइड नहीं कर सकते, डर तो आएगा ही, उसको चैलेंज की तरह स्वीकार करिए और उसके ऊपर विन करिए। दिस इज साइन ऑफ द गुड पर्सन एंड शी वाज बी एक्सीलेंट ऑन पर्पज। जिस काम के लिए है कि आप स्टूडेंट हैं, यहाँ पर आपको काम दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, you are asked to make presentation here, do your best, impress your own team member, जिनके साथ उठते बैठते रोज हैं, उनके सामने प्रेजेंटेशन करिए कि बंदा चौंक जाए, अच्छा ये तो ऐसा है, लगता तो नहीं था ऐसा। तो you should do yourself and impress on your own team members, impress them by your qualities, communication, the dresses, the way you talk, the way you are। ये दोस्ती है, उठते बैठते हैं, लेकिन मैं आप नहीं हूँ, मैं आपसे हट के हूँ। That will make achievement here. So don't follow, but lead. Lead by your action, lead by your conduct, lead by your behavior, and lead by your initiatives, lead by your achievements, lead by your contributions. Be achiever. Keep calm and be excellent here. आप में से इतने सारे लोग हैं, I request you all कि जिसके अंदर ये हिम्मत जग रही है, आज करेज हो रहा है, I will become achiever, and easy for me because I have to simply follow the path. What the achiever do? Simply. What they do, I will do. I will not achiever here. आपको किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं, मैं तो बनूंगा। Keep with you only. Don't share to anyone in the world, including your parents. Don't share to anyone here, otherwise they will make fun of you and you forget about it. Keep calm. अंदर उसके अंदर करिए, अपने क्वेश्चन के अंदर से कि I am taking a test today that I decided to have my own company. I am doing my MBA. I work in a company of my choice, and I learn the knowledge is gratitude, and then I have own company. I will not fulfill the dream of the others. I fulfill my own dream, and after some time start a company because you are here. So don't share. नहीं लोग मजाक उड़ा देंगे, आप लोग बनना चाहते हैं, जो बन जाते हैं। So अगर सच में बनना चाहते हैं तो keep with you, and one day when you should come here and achiever, they will know ये बंदा तो वही है। Without a sense of urgency, desire loses its value here.
जब तक आपके अंदर ये अर्जेंसी नहीं होगी, नाउ डू इट नाउ, डू इट नाउ नाउ, व्हेन यू डू इट नाउ यू परफॉर्म बेटर, you draw attention of others, people like you, they will give more work to you. So if you have a sense of urgency, ये काम मुझे करना है, जल्दी करना है, तुरंत करना है, so that I can impress upon, and once you impress upon, you get more work, you get more opportunity to do experience here, and that you take to make achieve here. My success was not only based on the intelligence, but as a common sense. Common sense, again I say the same thing here, you want to think before taking decision here. It's literally just like intuition. I told the example of, a common sense क्या कहता है, and common sense which is commonly missing. लोग बड़े बड़े decision लेते हैं, but common sense commonly missing here. Please apply common sense here. Who am I? मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? किस लिए आया हूँ? पढ़ने के लिए आया हूँ. एक बार मैं आईए में टहल रहा था, एक लड़का लड़की दोनों बेंच बैठे हुए थे, तो प्रोफेसर मैं लेते रहा हूँ तो लड़के ने कहा कि सर आ रहे हैं. अरे तो बैठो ना. कहते नहीं ये तो कुछ नहीं कहते सर. इस समय बात क्लास में कहा था कि आपका पर्पस ये है, यू आर कम हियर फॉर स्टडीज, केयर फॉर स्टडीज, केयर फॉर योर हेल्थ, केयर फॉर योर पेरेंट्स, एंजॉय द लाइफ. ये एज फिर नहीं आएगी, ये उम्र दोबारा नहीं आएगी, इसलिए इसको एंजॉय करना है. बट नेवर फॉरगेट द कोर. You have come for performance. You have come for the achieving a degree with the knowledge, not only the papers. If you receive the degree from this institution only, that you pay the fees simply, certificate, but you not carry knowledge here. At your interview based on the knowledge, company will hire you because of performance for interview here. The professor may give marks to pass it out, क्योंकि pass करना होता तभी नहीं लेंगे हम लोग ना. Company is not waiting for you. They will care for your the knowledge, skill, approach, attitude here. So please learn in the classroom, should be excellent and try to be achiever. जो कुछ भी करते हैं अच्छा करते हैं. एग्जाम में लिखते हैं, लिखने की स्टाइल अच्छी है, मीटिंग क्लीन लिखते हैं, प्रिसाइज लिखते हैं, प्रोफेसर को ध्यान से सुनते हैं. मैंने टॉपर से बात की है अपने आईएम वगैरह में, तो कहते हैं कि सर जब मैं कभी आता हूँ क्लास में, आई नेवर मिस क्लास, आई नेवर रीच क्लास लेट, एंड आई सिंपली लिसन प्रोफेसर. प्रोफेसर जो पढ़ाता है, जब वो कॉपी में देखता तो ही फील वेरी हैप्पी एंड ही गिव मोर मार्क्स. ये क्लू दे रहा हूँ आपको, पता नहीं आपके सिस्टम क्या है कॉपी आंसने का. प्रोफेसर हु टीचर्स हु गिव एग्जाम्पल इन द क्लासरूम, इफ यू राइट द सेम एग्जाम्पल इन द आंसर शीट हियर, यू विल बी मोर हैप्पी टू सी हियर. इफ यू मिस द क्लास एंड यू कंसल्ट द बुक्स एंड द गूगल, I have done a course from London last month here, and they failed me. मैं अभी बात पढ़ाई में कर रहा हूँ. They failed me only because I written very good answer, but answers are not based on their notes. I took the matter from the Google. I said, no, you read what I am telling you. I know you more than Google. You know the teacher, they know what you really want. If you listen them carefully, it will help you to become achiever. The praise makes you feel good and critic makes you better. खुश जैसे हमारा अभी क्लास होता है, जब मैं पूछता हूँ कि कैसा सेशन गया, मैं कुछ तो अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ, तो गिव फीडबैक असिस्टेंट होता है, हम लोग प्रमोशन ही होता है, इस बात बच्चों फीडबैक होता है. तो इसका मतलब नहीं कि आप गुड फीडबैक दीजिए. इफ यू आर वेरी कंस्ट्रक्टिव गिविंग फीडबैक कि सर इसमें ऐसा जोड़ दीजिए, ऐसा जोड़ दीजिए, I aid on, I get better feedback next year. But don't think that if somebody is criticizing you, is coming late, it means you should not come late tomorrow. Don't get angry, sir, उनको कहा नहीं है, हमको कह दिया है. Focus on you. You are you, not others. So what is agenda of the professor depends upon your achievement here. He is more interested in you, not interested in others also. He who not a good servant will not be a good master at all. देखिए आप ऐसे जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अगर आपको सचमुच श्योर बनना है, तो आप दोनों आप लोग कि आप में से कितने लोग जब कभी क्लास होते हैं और देखा कि कमरे की लाइट चल रही क्लास की, तो कितने लोग ऑफ करते हैं आपको? अगर करते हैं तो यू आर गुड. स्टोरी बताता हूँ मैं आपको. दो बंदे जो है किसी कंपनी में काम कर रहे थे, और काम करते करते देर तक काम करते रहे, बाद में आंधी पानी आ गया, तो वो ऑफिस बंद कर चले गए. जब रास्ते में जा रहे थे तो उसमें से एक बंदा कहता है, यार लाइट तो ऑन हो गई, ऑन रह गई उसकी. दूसरा कहता है, चलो क्या फर्क पड़ता है, वो इतनी बड़ी कंपनी हो गई.
कहीं पंखा भी रह गया है, छोड़ो यार बरसात हो रही, कहाँ जाओगे? उन्होंने कहा तुम चलो मैं लौट के आता हूँ। वो चला गया, ठीक है जाओ, वो लौट के आया लाइट ऑफ के। 15-16 साल के बाद दोबारा फिर मिले, बोले तुम क्या कर रहे हो? कहला मेरी कंपनी है। तो कहला तुम क्या कर रहे हो? कहला मैं उसी कंपनी में प्रमोशन मिल गया है। तो दैट इज डिस्टिंक्शन है। द डे ही वेंट बैक टू स्विच ऑफ द लाइट, switch off the fan, that day he was behaving like a master and he became the owner of the company here. This is mentality here. You're not harming the company, you're harming yourself. When something is coming to your mind, to the inside, वो क्या कहता है? You're working for the company, the employer trusts you. Go, switch off. The moment you have this feeling, it means you have a sense of ownership. And this ownership makes you owner, and servantship will make you servant. So always treat where you can go, what you can do. I'm not, I was putting fine on the student here, which was filing this mess wall on the things here. ये गंदा सेव करते थे, कोई क्वेश्चन आते थे, I was putting fine on them. I put fine, and that fine was used to rectify a village. उसी फाइन से बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया मैंने, उस फाइन से जो है बच्चों को उसी गाँव में आके रेक्टिफाई कराया। So this is the job of teachers, professors, that how you can inculcate a sense of responsibility, how to maintain a building very steady, to maintain the class officer. Now call to your action. अब मैं चाहता हूँ आपसे कुछ जाने से बाद जो है कुछ करना है आपको। एक तो क्या है कॉल, नेक्स्ट फ्यूचर, go back. The best way to predict your future is to create it right now. And so do not wait till tomorrow or next month. अभी तय कर लो, बताना किसी से नहीं, चुपचाप अपने पर रखना है कि मुझे यहाँ पर एक दिन आकर ऐसे भाषण देना है जैसे सर दे रहे हैं। And nothing to do, simply मैं वही करूँगा जो सर ने किया है। मेहनत करते थे, डिसिप्लिन करते थे, माँ बाप का नाम मानते थे, खत्म बात हो गया। You had fun, enjoy, go and see the movie. But while seeing movie, try to know your interest. उसी मूवी को देखते देखते कि तुझे क्या फील कर रहा है, उसी को तो कोर कॉम्पिटेंसी कहते हैं। Don't be casual even if you're seeing movie, because it is going to be an idea of what you like most and what is your ingredients, the best inside, the value is quality inside here. Next, my job is over now. Your job starts. Motivation is where gets you started. जितना मैंने मोटिवेट कर दिया है, अब स्टार्ट करना है। You should make commitment, not to me, commitment to yourself. Next, commitment is what transform a promise into reality. जो आप प्रॉमिस करते हैं उसको आप बार बार याद करेंगे कि सर ने मुझे क्या कहा था। अगर अचीवर बनना कि सर को कोई फायदा नहीं है, इसलिए टॉक आई एम नॉट चार्जिंग एनी मनी। जनरली आई एम प्रोफेसर, चार्ज 1 लाख रुपीज पर डे। हम लोग फीस होती है, कितना रुपये की होती है, but I am here free. So just I want to let you know that I am not asking you to do something. I am asking you to do yourself. अपने लिए करिए, मेरी कमिटमेंट उससे मुझे कुछ करना है। मेरा जन्म किस लिए हुआ है? मैं तो कुछ लेके नहीं आया था, जो कुछ मेरा सब्जेक्ट 50 तो है। तो I am lucky that I am studying here. I am listening to professor, कुछ achiever. I should not follow, not me. These qualities are for every achiever in the world. If you follow, you can become. ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि पॉवर्टी कार्ड विद लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस मोर डेंजरस देन द पॉवर्टी कार्ड विद लैक ऑफ मनी। गरीबी जो असली गरीबी होती है वो अपने ज्ञान की गरीबी होती है कि हु एम आई, मेरी क्वालिटीज क्या है, मेरे गुण क्या हैं, मैं अंदर से। अगर सचिन जो है फुटबॉल खेलते होते तो क्या करते? आज सचिन तेंदुलकर जो फुटबॉल खेलते होते तो क्या करते? नहीं पहुंच पाते ना। यही बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ। हर जगह पर उंगली मत लगाइए आप, हर जगह उंगली मत डालिए आप, ढूंढिए, टेस्ट करिए। Ultimately you'll be able to find this is the place, this is the person, this is the job, this is the activity, it is close to me, I will work. सचिन ने ढूंढा, किया और अचीव बन गया। तो इसलिए आपको ही ढूंढना है सचिन की तरह आपका गेम कौन सा है। Success comes from curiosity, the concentration, perseverance and the self-criticism. आपको should not criticize others, criticize yourself here. ये आज मैं लेट उठा, आज मैं अपना काम पूरा नहीं किया, आज मैं लेट ऑफिस गया, यही चीज़ इम्प्रूव करती है। टीचर में नॉट से, because they say कि ठीक है आ गया बंदा
पढ़ने का शौक था, बैठे पीछे बैठ गया। टीचर ask question. A good teacher always motivate to ask question. There is creativity here. So please be aware that what you have to do in the classroom here, the teacher must be ready to answer the question. If not ready, you can say, I will reply tomorrow. Next. So make a promise here that you learn more. आप तो पढ़ रहे हैं, क्लास आते हैं, but from today you will learn more. क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो पास होने के लिए पढ़ते हैं, पास में कुछ ऐसे होते हैं जिनको गोल्ड मेडल लेना होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये लर्न करना होता है कि मुझे इस कंपनी में काम करना, मुझे कैसे मिलेगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है एक ऑर्डिनरी आवर्स का सर्वाइवल के लिए होता है, पास होने के लिए, एनी आवर्स एक्स्ट्रा इज इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर। 1 घंटा अगर गॉसिप से बचा करके जो है आप उस एरिया में काम करते हैं जो एरिया आपके इंटरेस्ट का है, दैट विल मेक यू अचीवर हियर। So please take care. So be more. When you learn more, you become more. You be more, and when you be more, you can do more. And when you do more, you can get more. अच्छा काम को सैलरी मिलेगी। तो learning start from here, and from here, today decide tomorrow's placement. Tomorrow's placement decide that tomorrow's company. Tomorrow's company will decide your achievement, whether in the same company or your own company. माई मॉर्निंग रिचुअल, मैं क्या करता हूँ सुबह उठ करके, मैं अचीवमेंट के में सक्सेस मेरी है, मैं करता क्या हूँ सुबह उठ करके जो है, मैं सबसे पहले यही पढ़ता हूँ अपने आप के लिए, थैंक्स टू गॉड एंड हिज मैसेंजर्स, जो हम लोग हैं सब गॉड के मैसेंजर्स होते हैं, एंड दोज हु हेल्प मी यस्टरडे, जो कल जिन्होंने मेरी हेल्प किया था, उनको धन्यवाद देता हूँ अपने आप के लिए, चाहे दोस्त हो चाहे वो अपना पड़ोसी हो। सेकंड में पढ़ता हूँ कि मेक रिजॉल्व टू लुक एट गुड थिंग हियर, कि मैं जो है किसी की बुराइयों की तरफ ध्यान नहीं दूंगा उसके बाद, क्योंकि इट विल सेव योर टाइम। इफ यू फोकस ऑन अदर्स रॉन्ग थिंग हियर, इट मींस वेस्टिंग योर टाइम। तो सेव टाइम एंड इन्वेस्ट इन योर ऑब्जेक्टिव्स गोल्स हियर टू बिकम अचीवर। एंड थर्ड, बिलीव इन योरसेल्फ, कि मेरे अंदर क्वालिटीज क्या हैं, कि मुझे पता है कि हाउ टू मेक एन आइसक्रीम। सो आई नो द इंग्रेडिएंट्स, आई नो द टाइम, एंड आई विल पुट द ऑल इंग्रेडिएंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन एंड स्टार्ट द मशीन एंड गो बैक। मीन्स अच्छा सा कर्म किया, ठीक से काम किया, प्रोडक्ट में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सब एफर्ट्स करने के बाद भी जो है प्रोडक्ट नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। कई बार ऐसा होता है वो जो मिलता है आपको वो किसी बड़ी पिक्चर का एक पार्ट होता है जो मुझे नहीं पता। इसी जब मैंने लॉ ज्वाइन किया तो मुझे नहीं पता था कि मैं हाईएस्ट डिग्री होल्डर हूँ कंट्री में। मेरे जो दोस्त थे बीएससी में, अभी मैं मिला लखनऊ में, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो दोस्तों के लिए नाम काट दिया था आपका, क्योंकि तुम तो बर्बाद हो गए। एंड आई वाज टीचिंग हिम इन आई लखनऊ, उसने गले लगा लिया कि मैं सोचता था तुम ला पर बर्बाद हो गए। तो यही होता है कि हाउ टू मेक द गोल्ड फ्रॉम द वेस्ट, दैट डिपेंड्स अपॉन ट्रस्ट इन गॉड, थिंग्स विल गो बियॉन्ड। इसको ने कहा ना, कोई चीज़ अगर होती है कि अच्छे के लिए हो रही है, आपको अंदाज नहीं है, आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते क्या होने वाला है। एक बार अमिताभ बच्चन के फादर से पूछा गया कि सर सुना है आपको अवार्ड मिलने वाला है, तो ठीक है मिलता तो अच्छा है, नहीं मिलता तो और अच्छा है। उनका क्या मतलब, थिंक अबाउट कि मिलता है अवार्ड तो ठीक है, नहीं मिलता तो अच्छा मिलता अच्छा है, इसका मतलब इससे बड़ा अवार्ड मिलने वाला है, इससे बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, जितने मेरे दोस्त डॉक्टर बन गए हैं, दे ऑल से यू आर अचीवर, लेकिन मैं उस पीरियड में बर्बाद कराता था तो आई बिकम अचीवर हियर। सो इट इज योर क्वालिटी, इट इज इनसाइड you that how you can become achiever. Always be ready to help more and ready. जब भी कभी मौका मिलता है तब किसी न किसी आदमी को, प्लीज एवरीबडी इन क्राइसिस, इस दुनिया में चाहे वो डायरेक्टर इंस्टीट्यूशन का हो, चाहे आईएएस अफसर होता है, हर आदमी की जरूरत पड़ती है आपकी। गवर्नमेंट ऑफिसर डीएम वगैरह होते हैं, उनको अपनी स्कीम इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती है, कभी नहीं मिलते हैं। हेल्प ये भी हेल्प होती है। इट्स नॉट ओनली द बेकर्स गिव मनी, एनीबडी यू ट्राई टू एलिवेट, जो जहाँ पर है थोड़ा उठा दीजिए, यही हेल्प करती है। आप चाहे दोस्त हो, चाहे कलीग हो, चाहे क्लोज फ्रेंड हो, चाहे एन ऑफिसर हो, एनी एडिशन, एनी वैल्यूडेशन, बिकॉज ऑफ यू, योर गाइडेंस, योर हेल्प, ही गॉट समथिंग बेटर, समथिंग मोर, इज ए हेल्प। नेक्स्ट, एंड व्हाट इज माय नाइट अफर्मेशन। मैं रात में क्या पढ़ता हूँ सोने से पहले, ये बताना चाहता था आपको कि मैं पढ़ता हूँ कि आई हैव क्लैरिटी अबाउट माय गोल्स, मुझे क्या करना है। मुझे लॉ पढ़ाना नहीं है, मुझे पता है। I have to get interest in subject
रिस्पेक्ट फॉर द लॉ, ये मेरा एजेंडा होता, तो इसी ढंग से बढ़ाता हूँ आपको। आई नो द क्लोज, आई एम मेकिंग माई राइट चॉइसेस। जो कुछ भी है आप ये चॉइस के कारण है। आज मैं यहाँ हूँ तो मेरी चॉइस थी, आई टुक राइट चॉइसेस, आई टुक राइट डिसीजन, आई एम हियर। I am focused to fulfill my dreams. I focus to achieve my goals. I am motivated to fulfill my dreams. I let go to my fear of failures. मेरी लाइफ में फेलियर कभी आया नहीं। हाँ, मेहनत करनी पड़ी, सफलता मिली, लेकिन थोड़ा धूप भी मिली, चढ़े हुई, हर जगह पर चढ़े हुई। मैं एक बार जब फेलोशिप मुझे मिली गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से, तो यूपी गवर्नमेंट ने मना कर दिया मुझे, यू कैन नॉट गो देयर। बोले क्यों? मैंने पूछा क्यों? बोले आपने थ्रू प्रोफेशनल अप्लाई नहीं किया था। मुझे तो ओपन अप एडवर्टीजमेंट था, कहते नहीं यू कैन नॉट। वो चाहते थे अपना बंदा भेजने के लिए, तो ही रोट इट। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कहा कि ही सिलेक्टेड बाय ए प्रोसेस। इसमें 8 इंडियंस की कमेटी बनी थी, उसमें सिलेक्शन हुआ इनका। इट्स नॉट नॉमिनेशन, लेकिन वो बंदा सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस लेवल का बंदा, उसने कहा था नहीं। अल्टीमेटली आई टुक अनदर रूट। आई फाइंड माई फ्रेंड हु इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसे मुझे फेलोशिप मिली है कनाडा से, इन्होंने मना कर दिया है, इसे कम टू मीट मी इन लखनऊ। मैं लखनऊ गया, उन्होंने एक बंदे से मुलाकात कराई वहाँ पर। मैं डायरेक्टर ऑफ दी अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ आई सब्जेक्ट पढ़ाई होती थी। उनका सर आपको पोजीशन खाली है लॉ की? तो बोले हाँ, लेकिन उसमें जज चाहिए हमको होता है। नहीं सर, ये प्रोफेसर सिंगर इज़ वेरी गुड। बोले ठीक है, बायोडाटा भेज दीजिएगा। आई सेंड द बायोडाटा। फिर मुझे रिलीव नहीं कर रहे थे वहाँ से वो। तो डायरेक्टर ने कहा कि देखिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करने वाला नहीं, रिलीव कर दिया आपको। माई डोर्स आर ओपन 24 आवर्स, यू कैन कम एंड ज्वाइन। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने कैजुअल लीव के एप्लीकेशन दिया और यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। सी द रिस्क आई टुक इट। बिकॉज मुझे कनाडा जाना था, तो मैंने उस इंस्टीट्यूशन में जहाँ मैं काम करा था, वहाँ से कैजुअल लीव का एप्लीकेशन लिया, सेशन लीव परमिशन लिया, और उस इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन कर लिया, और वहाँ से चला गया कनाडा। और 3 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने मुझे रेगुलाइज किया बैक डेट से। सी द करेज, सी द रिस्क, एंड दैट आई अचीव इट। आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड मूविंग इट ईजी। I am surrounded by the people who enrich my life. मैं सबके साथ नहीं रहता, आप मुझे हल्के से मत लीजिएगा। आप सोचते होंगे मैं छोटी फैमिली हूँ, लेकिन मेरा दिल बड़ा है, मेरे इरादे बड़े हैं। मैं मिलूंगा, डोंट डिसअपॉइंट हिम। झूठ बोलिए उनसे, मम्मी की तबीयत खराब, मुझे जाना है, साथ छोड़ना है ना, बिकॉज इज वेस्टिंग योर टाइम। झूठ बोल दीजिए इससे, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग टाइम इन योर डेवलपमेंट। इफ यू वांट टू बिकम अचीवर, गेट स्मार्ट। हाँ, ये दुनिया है ना, ये दुनिया हैंडल करने की अलग कला होती है। भगवान झूठ मत बोलना कभी, वो परेशान जाता है क्या कर रहे हैं। लेकिन इस दुनिया को चीट कर सकते हैं आसानी से। हु इज नॉट गुड फॉर यू, हु इज वेस्टिंग योर टाइम, इज वेस्टिंग एनर्जी, चीट हिम आल्सो। मेरी मदद करें, खराब क्या करें यार, जाना जरूरी है। गो एंड स्टडी। फिर पूछेगा तबियत, हाँ तबियत ठीक है, 3-4 दिन नहीं मिलोगे, समझ जाएगी इच्छा नहीं मिलने का, छोड़ दिए उसको, क्या बुरा मानेगा, क्या नुकसान करेगा। But once you get award, he will come to consult you first. ये दोस्ती होती है। तो be aware, दोस्तों ना दें। I'm surrounded by the people who enrich my life. Nothing can stop me from the fulfilling my dream. मेरा इरादा है, मैंने तय किया है, और कुछ नहीं, मुझे करना वही है जो भी अचीवर्स करते हैं। That's all. ये मेरा इरादा है। I will not deviate. Nobody can deviate. Nobody can change. Nobody can stop me. I'm unstoppable. Nothing can stop me from fulfilling my dream. And I always say to myself, अभी भी आज की तारीख में भी मैं अपने आप से क्या कहता हूँ, I am an achiever of high goals and dreams. I am an achiever of high goals and dreams, and I am an achiever of high goals and dreams. 3 बार ये कहने के बाद मैं ईश्वर को याद करता हूँ। You will become when you see yourself. और कुछ ना कहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड होते हैं। आपने इसको जिंदगी ग्राउंड करिए, बैठिए। अब आप थोड़ा सा, आपको बहुत ही अच्छी बातें कही है। आपके लिए एक म्यूजिक में लाया हुआ एक थोड़ा सा, इसको आप देखिएगा। इट विल हेल्प इन बिग वे कि जब भी कभी क्राइसिस होती है आपको ना, तो परेशान नहीं होना है, चुपचाप हाथ बंद करके आराम करना है। इसको लगाइए जरा, म्यूजिक ऑन कर दीजिए, ऑन हो जाएगा। क्लिक करिए, कर दीजिए, अपने कॉपी कर लीजिए, अपने डाल दीजिए। इट्स वेरी गुड। जब भी कभी आप निराशा कभी होती ना,
कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, चुपचाप इसको सुना कीजिए आप, ओपन योर आइज, खूब सुकून आएगा आपको कि मैं जो है आगे बढ़ने वाला हूँ, मुझे रुक नहीं सकता हूँ, केवल और केवल मुझे रुकना है, रेस्ट करना है, एनर्जी रिस्टोर करना है, फिर अटेंड करना है। हार वो नहीं होती जो हारते हैं, हार वो होती है, जीत वो होती है जो हारने को उठ जाते हैं, भागते नहीं, बैठे रहते हैं। 1 year ago. Yeah, but feels like you're standing on the edge, looking at the stars, and wishing you were them. What do you do when the chapter ends? Do you close the book and never read it again? Where do you go when the story's done? You can be who you are, who you become. Because you're achiever. Simply you have to explore, you have to emerge. The quality you have somewhere, you have to emerge. Thank you. Yes, question please. Ask question, yeah. Leaders are not followers. The first quality. Leaders are not doing something different. They do think differently. दाल चावल सब्जी रोटी यही होता है, सब डिश बनती दुनिया के अंदर। तो क्वालिटी सबके अंदर होती है, लीडर्स के अंदर होता है, they become the first, they become the excellent. They have the sense of urgency. They know where they have to go. They're not confused. Nobody can deviate them. The leaders are those who knows where they have to go. They knows they goes. And people follows. बताया ना लीडर जो मैंने रेड लाइट पर उस बंदे को, उसने कहा कि मेरे पापा ने तो कभी रुका ही नहीं था, आज आपने पढ़ाया, वो भी कोर्स खत्म होने के बाद रोड के ऊपर ला पढ़ा दिया आपने। And he remembered my life. Learning may happen at any place. Learning may happen from anyone, not necessarily from your parents, from teacher. Any book can be your leader. Any book can be your achiever. So please try to find out the good books here. अभी देखा कितना सारा एडवर्टीजमेंट आता है आपके बालों के लिए, आपकी क्रीम्स की, but people are spending a lot of money on physical fitness, but they're not spending money for mental alertness. They're not buying books, they're buying cosmetics. They spend money. You should have a courage, confidence, glow will come on face. There's no need for any cream. Don't use Fair and Lovely. Don't use it. Simply be confident. Be the follower of the law. Don't do anything here. You know the case of Paris Hilton. Paris Hilton, have you heard the name? Beautiful girl, very rich. लेकिन न्यूयॉर्क में जा रही थी वो, कांस्टेबल पुलिस ने पकड़ा उसको, मैडम स्टॉप द कार। So what happened?
She was coming from beauty parlor. तो मालूम हुआ उसके पहले ड्रंकन ड्राइविंग में इसका लाइसेंस रद्द किया गया था. उसने कहा मैडम यू आर अरेस्टेड. She start weeping मम्मी मम्मी का मम्मी नहीं इस रूल ऑफ लॉ. उसको जितना मेकअप किया था सब क्या है अगर वो लॉ को फॉलो करती चेहरे पे कॉन्फिडेंस होता तो बिना मेकअप चल जाता. तो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम इन कॉस्मेटिक्स हियर. इनर ब्यूटी दैट विल रिमेन फॉर लाइफ. जब मैं फर्स्ट टाइम गया वाइस चांसलर के इंटरव्यू के लिए तब मैं टाई लगाता था. तो गवर्नर साहब ने मुझे बुलाया. उनका कि यू आर टू यंग टू बिकम वाइस चांसलर. टाई लगाता था. 11 बन के 3 वाइस चांसलर सफेद बालों से. See the beauty of natural beauty. Any other question? Yes. जी. देखिए 2 चीजें होती हैं. एक होता है कि आई डू नॉट नो कि आप में से कितने लोग शादी नहीं हुई है. शादी हुई है. आपकी हुई शादी. अब सवाल मेरा ये होता है. सुनिए if you really want a good partner, you find qualities and love and have relationship with marriage. If not, keep on postponing, then parents will make it partner for you. So earlier you are loving, not loving, you should start loving what parents do. तो 2 चीजें होती हैं. एक सेकंड में होता है कि उसमें प्यार है, लेकिन अगर मजबूरी है तो उसको प्यार को सुन कर दीजिए. सेकंड अगर ऑप्शन है तो उसको सेकंड रखिए बेंच पर. सेकंड पढ़ने पर जैसे 2 सब्जेक्ट होते हैं आप दोनों पढ़िए आप 1 घंटे के लिए. then feel when you study one subject you feel tired. it is not दुनिया के अंदर ध्यान रखिए कि जो चीज़ इतनी आसान होती है वही नेचुरल होती है वह अच्छी होती है. अगर किसी काम में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इसका मतलब इट इज नॉट नेचुरल. सम रूल रिमेंबर. जिस काम में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसका मतलब इट इज़ नॉट कोर कॉम्पिटेंसी. आपके दिल के नज़दीक नहीं है. उसको नहीं करना है. अगर अचीव बनना है, नौकरी पाना है, तुरंत हमको मार्केटिंग मिलनी चाहिए, वो आप कहते रगड़ रगड़ के पास कर लिए प्लेसमेंट हो गया. लेकिन यू कैन नेवर बिकम अचीवर. तो जितनी सिंपल चीज़ें होती हैं, जितनी आसान चीज़ें होती हैं, वही आप भी है, उन्हीं को अपनाइए, उन्हीं से बड़े बनेंगे आप. डोंट गेट कंफ्यूज हियर. फाइंड एक करके जो है जैसे रिसर्च करते हैं ना लोग 1 चैप्टर 2 चैप्टर करके, तो आप भी रिसर्च करते रहिए 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में. लेकिन किस में ज़्यादा मज़ा आता है, इसको पढ़ने पर थकान नहीं आती. Yes, any other question? Sir, as you said, your brother told you that you are lucky. What is luck and your very brother? Very good question. Lucky क्या होते हैं बताइए? Lucky क्या होते हैं? Lucky are those who are mentally prepared. Lucky are those who are not finding paths. ये मेरी माँ ने कहा था कि अगर कोई आदमी दूसरे बुराई नहीं देखता है, इसका मतलब वो भाग्यशाली. जो आदमी उसकी बुराई नहीं देखता है, जो बुराई ढूंढता है, वो भाग्यशाली क्यों है? क्योंकि इज नॉट वेस्टिंग टाइम, इज वेस्टिंग हिज टाइम. इज ओनली टाइम का सक्सेस. ओके, ऐसा नहीं कि सेकंड 11 के साथ नंबर पैदा होकर गलती हो गई. ये आपको मोटिवेट कर सकते हैं पेरेंट्स आपको कि आप जो पैदा हुए थे जश्न मनाया गया था, आपके पैदाइश के लोगों ने खुशी की. यू कैन सेलिब्रेट इट हियर, बट इट विल नॉट वर्क if you not make efforts. कहते you cannot make zero. You cannot make 1 from 0. If you have done 1 effort, luck can put 0 to make 10. It make 100. It can 1000 here, but you have to make 1 by your own efforts. तो पहले पुरुषार्थ फिर भाग्य. पहले पुरुषार्थ make 1 and then भाग्य. ठीक है? Yes, another question. Sir, any kind of book that you have read and change your mindset, or any 2 lines that 2 lines have made you highly motivated, or a quote that you can share with us. So say it again. Sir, any kind of book that you have read, or any मुझे सीखना को अच्छा लगता है कि winners are not doing something differently. They are doing something different. They are doing differently. जैसे मैं पढ़ाता हूँ लॉ को, तो हमारे क्लास में लॉ स्कूल बच्चे फेल हो जाते हैं. You know what I'm saying?
IM में बच्ची जो है आपको MD करते हुए लड़की आई तुम्हारे पढ़ने के लिए MD, और वो लड़की जो है वो तो खैर पास हो गई, 2 लड़के लास्ट में तो लाभ ही फेल हो गए। तो मैंने पूछा कैसे हो, बोले आपका पढ़ाने का तरीका लगा। ये इंजीनियर्स टॉपर्स हो गए, इंजीनियर्स जो लोग ना पढ़ाने का टॉप हो गए, उसको पढ़ाने का तरीका जो होता था, क्योंकि आई वॉज इंटरेस्टेड टू डेवलप इंटरेस्ट इन देम। आई डिजायर दैट दे शुड हैव अ डिजायर फॉर टेकिंग लॉ इंटरेस्ट। तो ये चीज़ होती है, यही एक होती है। कैसे जब मैं आता हूँ अपने क्लास के लिए आता हूँ तो रास्ते में सोचता हूँ कि हाउ आई शुड मोटिवेट माई स्टूडेंट क्लासरूम, व्हाट आई शुड से, व्हाट आई शुड शो एंड व्हाट आई शुड आस्क टू मेक यू हैप्पी। क्या कि मुझे कुछ हट के करना है, तो ये सीखना की लाइन होती है। वही मुझे पसंद है। विनर्स जो होते हैं, अचीवर्स जो होते हैं, दे आर नॉट डूइंग डिफरेंट थिंग, दे आर डूइंग डिफरेंटली। हर काम को अच्छे से कर सकते हैं, अलग से कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन की स्टाइल होती है, जैसे कि कई लोग होते हैं कि अपना परिचय देते हैं पहले कहते हैं मैंने ये काम किया, उसके बाद अपना परिचय देते हैं। तरीका अलग होता है। You interested because he's asking about you are here because I am going to speak on the topic which is close to you. नहीं बोलना सोचते कि मैंने लास्ट में पढ़ाया, ये सब पढ़ाया, वो पढ़ाया, तो नहीं होता है। आपका होना चाहिए कि आपके जो बंदा सुनने वाला है उसके दिमाग में जो क्वेश्चन है, should not reply the question but he replies the mind. You know getting? ये बंदे के अंदर क्वेश्चन कैसे से आपके अंदर आप देखे पूछ रहे हैं, आप पूछ करके खड़े भी हैं, इसका मतलब है आपके अंदर एक desire to know the exact answer here. And a good teacher never finishes syllabus. A good teacher never finishes syllabus. He develops interest in subjects so that you can go beyond. My reply may be not exact, but I am motivating you further to do research for the question. This is leadership. Get my point? Don't think everything is taught in classroom here. Don't think that I am what I have taught. That is it. It is a beginning. It is beginning here. You can aspire. You can move forward here. So these answers are only a hint to your question, but you can do further research on this. Because I do not know your mindset here. If I'm किसी से पूछ रहे हैं, I cannot know. So if you read this question and try to know from others also, you can ask questions to 3-4 persons there, and then you can try to get the answer. Share answers here. Because I do not know your mind here. It is only you know that whether I am giving an answer, also giving hint and motivating you to ask to others also. Not that I am final. Okay? Got it? Yes, anyone else? So what thing you should do first when you face the struggle? The struggle is in life or studies? In the life and as well as studies. Except as such. Struggle is होता है in life. जो जैसे होता है आपका पड़ोसी डिस्टर्ब करता है आप except as such. Then try to apply the mind. ये बंदा जो है मेरा पड़ोसी है वो डिस्टर्ब करता है। ये के बच्चे होते हैं, रात में पढ़ाई होती है, डिस्टर्ब होते हैं। अब मैं क्या करूँ? हमने पूछा कि अंकल आपका बेटा कितने साल का है? तो आप मालूम है आपको डिस्टर्ब करता है। तो इस बच्चे से डालिएगा। लेकिन कई पेरेंट्स को देखा मैंने कि जब बच्चे छोड़ने जाते हैं तो वहाँ बच्चा रोता है, वो सो नहीं पाता है, तो जल्दी सुला दिया कीजिए, जल्दी सो जाएगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यू कम्युनिकेट इन अ वे कि जैसे लगता है वो मेरे लिए कह रहे हैं। आपने अपने लिए उसको मोटिवेट किया कि बच्चा जल्दी सो जाएगा, तो आपको जब छोड़ने जाएंगे तो बच्चा रोएगा नहीं। लेकिन बाय दिस वे यू कम्युनिकेटिंग तो यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम हियर। तो इट शुड बी क्रिएटिव। किसी भी समस्या का समाधान जो होता है वो समस्या के साथ ही जुड़ा होता है। सिंपली समस्या जो होती है उसकी समस्या की जड़ में ही उसका आंसर होता है। तो इफ यू गो डीप थिंकिंग कहते हैं, अचीवर्स डू दिस थिंक अबाउट व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू फाइंड ए क्रिएटिव आंसर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया उसको, वो समझ में नहीं पाया कि आपने उस हित की बात कही कि आप कहे था कि बच्चा जल्दी सोएगा तो जल्दी उठेगा, इसको यहाँ दिक्कत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको डिस्टर्ब करता था तो इस बात से आप चॉइस करते हैं आप। यस, एनी अदर क्वेश्चन? या Sir, to become achiever in life, there are role of motivator is very good. very good. Yeah, motivator is when we achieve anything in your life, then the backside the motivator play important role. So in your life, who is motivator? Mother, my mother, mentor, mother. So instead of teacher,
टीचर माय दिवाकर सर जो लिखा था कि मेरी कॉपी में लिखा था, जो सबसे मैं पीछे बैठता था, पहले मैं मार खाया था, हमने पढ़ा था मैंने कि वो पुरुषार्थी वही आके देखा है बदल दे और अनुशासन का जीवन है। लेकिन जब अगले साल में दिवाकर सर ने मेरी कॉपी जांची और नंबर दिया, उन्होंने उसमें लिखा था एक विश्वविद्यालय का नाम रोशन करोगे। तो जब मैं वाइस चांसलर बना तो मैंने कहा कि सर मैंने बताया था बेटा, मैंने पूछा सर कैसे, द वे यू राइट आंसर, इसका मतलब था कि पेरेंट्स आर सप्लीमेंटिंग टीचर्स। जो बच्चों के माँ बाप अलर्ट रहते हैं, जो स्कूल पढ़ाया जाता है उस स्कूल को सप्लीमेंट करते हैं पेरेंट्स को, इट्स नॉट लिविंग टू द स्कूल ओनली। तो वो टीचर दिवाकर सर थे। थैंक यू। यस, How you push yourself to your worst time and whenever you feel low. वेरी गुड क्वेश्चन। जब आप लो महसूस करते हैं आपको क्या करना चाहिए? फील हाई, उल्टा करिए। जब प्यास लगती पानी पीजिए आप, जब गर्म होता है तो ठंडी पट्टी रखते हैं। ऐसे जब भी लो होते हैं म्यूजिक सुनिए, आप म्यूजिक सुनिए, कुछ वाइब्रेटिंग आप देखिए, गूगल डालिएगा, उस पर यूट्यूब पर डालिएगा, द म्यूजिक फॉर द लो टाइम, यू गेट आपकी पूरी बॉडी जंप करेगी, यू गेट एनर्जी एंड यू फील लो, यू विल हाई। Is that the thinking high itself make you high? It's okay. Leave the place where you're feeling. First of all, take care please. जब भी आपका मन नहीं करता पढ़ने का, या जहाँ पर आपको लगता है, put the place immediately. उस जगह छोड़ना तुरंत छोड़ दीजिए उसको। उस जगह तुम छोड़ दीजिए, वहाँ हट जाइए आप। पढ़ने का मन नहीं करता, आप बंद कर दीजिए। दोस्तों से बात करके बाहर हटा लीजिए। वहाँ से हटने के बाद जो है, you are trying to move away from low. You know, you making efforts to go higher, and then your intuition will tell you the tricks. What you should do: listen to music, talk to friend, call a friend who is your appreciator. Madam, you look very smart. You are very good in class. I have seen your presentation here. The moment you listen to the word, you feel motivated. Success, सफलता क्या है? Very good question. क्या ऐसा बता देंगे? सफलता वो है जो आपके अपने गुण हैं उनको आप मैक्सिमाइज कर लें। रियल सफलता ये होती है। बड़ा मकान, बड़ी दुकान, ये सफलता नहीं होती है। बड़ा इंसान जो होता है, अपनी क्वालिटीज होता है कि पीपल रिमेंबर हिम इवन आफ्टर इज नो मोर बाय अचीवमेंट है। तो जैसे कहते हैं कि आई एम पीसफुल, से मैं अपने आप कहता हूँ आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल, I am loveful, I am powerful, and I am knowledgeable person. I am loveful here. तो अगर इन चीजों को एक्सपेंड करते हैं आप, जैसे if I love myself, then I love my quality and I expand them. जैसे कि मुझे बच्चों को मोटिवेट करना अच्छा लगता है, तो जब मोटिवेशन किताबें पढ़ता हूँ मैं, और पढ़ने के बाद मैं नॉलेज को शेयर करता हूँ, then I feel successful. It's okay? Try your own success. Everybody in this world has a bond. इस दुनिया में आपके माँ बाप जो है केवल माध्यम है आपको लाने के लिए. You have come through them. You have come through them, but you have the divine soul. The qualities are different. 30% qualities may come from parents, 30% come from the environment inside, and 30% from the outside here. The 66% personality depends upon you, how you take from it. The success depends upon what you like most, and try to achieve one by one. Go slow, tired, take rest, move forward, go further, be success. Thank you. Give success is give satisfaction, happiness. Anything you do, if giving satisfaction, happiness, success. Yes. Sir, can I ask? Yes, sure. Sir, I believe motivation is for the limited time. Inspiration lasts longer. So, sir, how to get inspired? How to get inspired? Remember me? ये गांव का बंदा जो है हार्वर्ड क्लास तक गया, उसकी किताब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम साहब ने रिलीज किया, वो चीज जिससे बंदे के साथ काम किया, बेस्ट दुनिया की जो बेस्ट फेलोशिप होती है, फुल ब्राइट फेलोशिप, देखिएगा पढ़िएगा। अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे 1 साल तक अपने यहाँ रखा, कैसे दामाद की तरह पूरा किराया दिया, घर से लेकर वहाँ तक रहने के लिए, मैं किया।
तो ये चीज़ें होती हैं, आप डिपेंड करता है कैसे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हर एक चीज़ के लिए जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती, ध्यान रखिएगा। वैसे आशीष जी ने कहा था कि मुझे कुछ लाना नहीं, लेकिन फिर भी चूँकि आशीष क्या समझ रहे, मैंने कहा कि आपने कहा लाना नहीं, लेकिन मैं कुछ लाया हूँ, चूँकि मैं लखनऊ को हूँ तो मैं क्लोज कर रहा हूँ कि मैं लखनऊ से लाया हूँ क्या आपके लिए, देखता हूँ है मैं लखनऊ का हूँ तो लखनऊ का लाना चाहता हूँ। ध्यान सुनिएगा, बैठ जाइए बाप जी, हमारी बात खत्म हो बहुत हो गया। आपको आप क्वेश्चन करना है तो सेंड द क्वेश्चन टू आशीष जी, आशीष भी रिप्लाई ये लिख के लाया हमें लखनऊ से और तो लाया नहीं मैं, क्योंकि मास्टर क्या ला सकता है, टीचर क्या लिखना है, क्योंकि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा होगा उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। चाहिए ना विश। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ये अच्छी बस के लिए और कुछ चाहिए? परिंदों को मंजिल मिलेगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर ये लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, इसीलिए मैं कहता चुपचाप रहिए। इतनी अचीवर्स बोलते हैं, मैं कभी भाषण देता था, जब अचीवर तो बोल रहा हूँ, इसको पहले बोलता था, इसीलिए आपको भी चुपचाप रहना है। जब ये मैडम बुलाएंगे एक बार बेटा आके खोल दो पंख, खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी न समझ नादा, हर उफान बाकी है। लास्ट में जो है, आंखों में मंजिलें थी जिनकी डिजायर, आंखों मतलब था ब्रेन, आंखों में मंजिलें थी जिन्हें और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। Thank you friends, I'm so happy. आप सब खुश रहिएगा। This meeting is actually I'm going to share with my student in IIM Nagpur today about session here. I will say that I had a chance to meet the energetic, enthusiastic youth of this college, and they have energy, enthusiasm to go ahead. Please try your best. Move forward, go ahead, be achiever. Thank you. Thank you so much, sir. A good leader is like a candle burning. It consumes itself to light the way for others. This is rightly depicted to our director, Dr. R.T. Deshpande ma'am. I kindly request Dr. R.T. Deshpande ma'am, director of Raisoni Business School, for the vote of thanks. A warm good morning to one and all present here. It's an absolute pleasure to propose a formal vote of thanks in front of the August gathering over here. It was such a motivational talk. I'm really happy, sir, to be a part of this, amongst the audience. And from the bottom of my heart, thank you so much, sir, for inspiring these young minds with your word of, so many stories you have depicted here. You have narrated your own journey over here, and this means a lot to these young kids sitting over here. And I really thank you that you have spared your valuable time and graced this particular event today. And we look forward to have
such kind of motivational speeches in near future also. On behalf of the entire Raisoni group of institutions, I also thank Ayal sir because he is one of the instrumental who has brought sir over here. Otherwise, we would have missed the opportunity. Though sir was here in Nagpur, we were not aware of it. So thank you so much for being here and helping us to get sir here, and our students got motivated because of this. Thank you so much. I also thank Dr. Mr. Nikhilesh Savarkar sir, who was constantly supporting us in organizing this particular event. Thank you so much, sir. I also thank all the organizers, Dr. Jyoti Mahajan, Dr. Bagne, Professor Vishal sir, for being here, Vikas sir, for being here, and not the last but or least, all the students who are here from the management fraternity, who has been here and a patient listener. And I hope that in near future also we will be organizing a lot of events, such kind of events for you guys, and you will be the part of these events. Before leaving the stage, sir ने जैसे कहा था motivation के बारे में बहुत कुछ कहा. I'll just speak few lines from Harivansh Rai Bachchan sir, जिन्होंने कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की नहीं होती. So keep trying and do your best and enjoy together. Once again, thank you Sengar sir for being with us. Thank you sir.